आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, सो यहाँ पे हमें एक पैसेज दिया गया है। लेट्स रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट इज गिवन एट द एंड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि what's the one thing that you associated with your college days? For me, it was consuming copious amount of chai. A cup of tea was a panacea to all troubles and companion to all joys. In this exclusive interview, we caught up with a 65-year-old Deepak Garg, owner of Ganga Dhaba, a spot where every officer from National Academy of Administration has visited multiple times. फिर आगे कहा जा रहा है कि Deepak begins, my family has been here for almost 90 years. It was my grandfather who first started working here as a supplier to the hotel that existed then. In 1964, Deepak was all of 8. He lost his father and the responsibility of raising 4 children fell on his mother. फिर आगे कहा जा रहा है, our growing up years growing up years were a huge struggle. My mother used to teach home science at a local balwadi school, and which was also where my siblings and I studied. He says in 1978, Deepak says he started a food joint that he named Om Chinese Restaurant. ठीक है, Om Chinese Restaurant उसने नाम दिया था. And in those days there were huge liking for the Chinese food. ठीक है, और उस टाइम में क्या था, चाइनीज फूड की बहुत अच्छे मतलब रिस्पॉन्स अच्छा था, पीपल वर लाइकिंग द चाइनीज फूड। देयरफॉर उन्होंने क्या किया था, अपने जो ढाबे का नाम उन्होंने क्या कर दिया था, उस चाइनीज फूड के ऊपर ही रख दिया था। ठीक है, हेंस द नेम एंड द चॉइस ऑफ क्यूजिन ही सेज। फिर आगे कहा जा रहा है कि for almost 17 years, things continued, and then Deepak got a public call office (PCO) installed for the officer trainees. The business did so well that soon he had to install more than 10 telephones with separate cabins to allow them some privacy while they made and received their calls. The OTs who would talk on the PCO from here would always refer to the place as Ganga Dhaba. Alright, the OTs refer to the place as Ganga Dhaba. It was because this place was so close to Ganga Hostel inside the academy that slowly the name changed and it becomes the Ganga Dhaba. ठीक है, तो Chinese cuisine से आपका क्या बन गया था, Om Chinese cuisine से it turned into Ganga Dhaba. Since it was the OTs that gave us our identity, we decided to change the name and call it Ganga Dhaba. He says. फिर आगे कहा जा रहा है, there have been instances when Deepak and his family members have learned dishes from the OTs. He says, so many dishes on our menu today are because some officer came in and decided to teach us how to make them. Alright. फिर आगे कहा जा रहा है, we have seen 2 generations of officers serve the parents who now as the parents come back to drop their children at the academy and tell us to take care of them. Alright, so what more can we ask for? While the money we make is not great, the respect and the love we have accumulated over the years is what keeps us going, says Deepak proudly. Okay, तो यहाँ पे देखिए अभी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, read the following statement. Mr. Deepak named his food joint Om Chinese. फिर आगे कहा जा रहा है, Chinese food was then popular among the people. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस थर्ड स्टैंजा में कहा जा रहा है कि सबसे पहले दीपक जी ने अपने रेस्टोरेंट का नाम क्या रखा, ओम चाइनीज रेस्टोरेंट। ऑलराइट, और उन्होंने ओम चाइनीज रेस्टोरेंट रखने का नाम, दैट मीन्स ये जो चाइनीज वर्ड उन्होंने यूज किया है, इसको रखने का कारण क्या बताया था, इसको रखने का कारण उन्होंने ये बताया था कि चाइनीज फूड वॉज वेरी पॉपुलर देन। ठीक है, तो चाइनीज फूड था ना, दैट वॉज वेरी पॉपुलर देन। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 इज द कॉज फॉर स्टेटमेंट 1। जी हाँ, उन्होंने चाइनीज फूड बिकॉज पॉपुलर था, इसीलिए दीपक ने उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम ओम चाइनीज रखा था। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर ऑप्शन बी कह रहा है 1 इज द कॉज फॉर 2। जी नहीं, ऐसा नहीं था कि उनके रेस्टोरेंट के वजह से, ऐसा नहीं था कि उनके रेस्टोरेंट का नाम ओम चाइनीज था इसलिए लोगों को चाइनीज पसंद था, ये गलत है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। जी नहीं, उस समय में पॉपुलर था, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर ऑप्शन डी कह रहा है 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। जी नहीं, ये भी आपका गलत है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।